नमो नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारोग्यमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतममृतघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याम् शुकपरिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् दावाग्निलीलम्। धन्यवाद वृषाली जी। आज के सत्र के लिए हमारे साथ केंद्रीय कार्यकारिणी से उपाध्यक्ष वैद्य श्री मल्हार जोशी सर जी हमारे मार्गदर्शन के लिए जुड़े हैं। मैं उन्हें हमारा प्रणाम अर्पित करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य समझती हूँ। उनके मार्गदर्शन संदेश के पूर्व मैं वैद्य श्री मल्हार जोशी सर जी का परिचय करवाना चाहूंगी। वैद्य श्री मल्हार जोशी सर जी का जन्म 11 सितंबर 1968 को हुआ। माधवनगर के शेठ रतिलाल गोसलिया हाई स्कूल में शालेय शिक्षण पूर्ण किया। वसंतदादा पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज से पदवी संपूर्ण की। अपने गुरु परम पूज्य स्वर्गवासी श्री अन्नादाता शास्त्री जी से गुरुकुल पद्धति से इन्होंने आयुर्वेद की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की। पिछले 33 सालों से माधवनगर सांगली में शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। इनकी विशेषता ये है कि सर अपने चिकित्सालय में स्वयं तैयार की हुई औषधियों का उपयोग करते हैं। विभिन्न माध्यम से जैसे चूर्ण, क्वाथ, घृत, तेल इत्यादि औषधों का प्रयोग करते हैं। विशेषतः विभिन्न भस्म जैसे मंडूर, माक्षिक, नाग, वंग, जसद, ताम्र, रौप्य, सुवर्ण, हीरक भस्मों का सफल उपयोग अपनी चिकित्सा में करते आ रहे हैं। इसी के चलते अनेक यकृत विकार, मूत्राशमरी, उदर, संधिवात, बाल रोग, पचन विकार, विकृत विकार, स्त्री रोग, कर्क रोग एवं हाल ही दुनिया को हिला देने वाला कोविड-19 विकार पर इनकी सफल चिकित्सा प्रणाली है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद व्यासपीठ के सांगली जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ पश्चिम विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी के सह कार्यवाह भी रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय गुरु के पद से भी सम्मानित है। परम पूज्य स्वर्गवासी श्री शेंडे शास्त्री रसौषधि पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। मैं आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलोर शाखा की तरफ से वैद्य श्री मल्हार जोशी सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करने की अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। अभी मेरा परिचय देते वक्त अन्ना शास्त्री दातार ऐसा उल्लेख किया गया। वैसे मेरे गुरुजी है वा दातार शास्त्री, लेकिन जो परिचय में बताया गया वैसा सौभाग्य यदि मुझे मिल जाता तो और भी आयुर्वेद की तरक्की करने में मेरी सहायता हो सकती थी। धन्यवाद। आज हम चौथी क्लिनिकल मीटिंग के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ गेले गत 25-26 साल से आयुर्वेद क्षेत्र के लिए यानी आयुर्वेद के विद्यार्थी, शिक्षक, एमडी करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले सभी स्टूडेंट्स ऐसे सिर्फ एकेडमिक लोगों के साथ व्यापारी, औषधि निर्माते, जो भी आयुर्वेद से संलग्न हुआ
व्यक्ति अभी समाज में है उन सभी के लिए और ज्यादातर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से काम करने वाली एक संस्था है। 25-26 साल से पूरे महाराष्ट्र में इसका कार्य जोरों शोरों पर चल रहा था। अभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे ऊपरी राज्यों में भी इसका काम शुरू हो गया है। वैसे ही अभी नीचे कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में हम इसका कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। उसी के चलते एक 6 महीने से हम बेंगलोर में व्यासपीठ की शाखा स्थापन करने का, वैसे तो 1 साल 1.5 साल से मैं धारवाड़ को भी जाता था, धारवाड़ की शाखा भी हमने चालू की थी। उसके साथ बेंगलोर में यदि राजधानी में ही काम हमारा शुरू हो गया तो पूरे कर्नाटक में हम इसका अच्छी तरह से आयुर्वेद के लिए, व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं, किसी का खुद का इसमें कोई भी लाभ है ऐसी बात भी नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद की उन्नति के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहला ये क्लिनिकल मीटिंग का विषय रहता है। हम सब इकट्ठा होकर, अभी हम जो क्लिनिकल मीटिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक विषय पर एक सब्जेक्ट लेकर एक रुग्ण चिकित्सा अनुभव ऐसे हिसाब से हम अभी शुरू किए हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ऑफलाइन मीटिंग हमारी शुरू हो जाएगी तो आयुर्वेद व्यासपीठ के बाकी जो आयाम है उनके बारे में भी हम प्रयास करने वाले हैं। मुझे लगता है पहले से ही थोड़ी देर हो चुकी है, तो हमारे जो आज के वक्ता है वैद्य संदीप जी काले, वो भी प्रारंभ से ही आयुर्वेद व्यासपीठ के साथ जुड़े हुए हैं। उनका अलग से परिचय भी दिया जाएगा। बहुत अच्छे वक्ता भी है, कार्यकर्ता भी है और अभी पहले पुणे में थे, अभी बंबई में स्थित है और बहुत अच्छा आयुर्वेद के लिए उनका काम भी चल रहा है। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुकना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के वक्ता वैद्य श्री संदीप काले जी का बड़ा ही दिलचस्प विषय है। निश्चित ही हम सब बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, परंतु उससे पहले मैं वैद्य वृषाली जी से संदीप काले जी का परिचय देने की अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। वैद्य श्री संदीप काले जी का जन्म 23 अक्टूबर 1983 को हुआ। जलगांव के पाचोरा जिले में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी जो बीएमएस की पदवी है वो उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज पुणे से प्राप्त की। श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर से उन्होंने रोग निदान में एमडी ये डिग्री प्राप्त की और उसके बाद में अभी सर की पीएचडी शुरू है वाईएमटी खारघर कॉलेज से। उन्होंने डिप्लोमा इन योगा आयुर्वेदा की भी पदवी उत्तीर्ण हुई है। वर्तमान में वे आर्य पोद्दार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई के रोग निदान विभाग के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी के साथ सत्यान्वेषणम टुडे के सहायक संपादक भी है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च के रिव्यूअर भी है। पदवीधर एवं पदव्युत्तर छात्रों के लिए 2014 में निदानात्मक रुग्ण परीक्षा व लैब टेस्ट नामक पुस्तिका एवं 2016 में आयुर्वेदीय रुग्ण परीक्षण नामक 2 पुस्तकों के लेखक रहे हैं। आईसीसीआर के मुंबई विभाग के अंतरराष्ट्रीय छात्र समन्वयक रह चुके हैं। सर 2022 के आयुर्वेद दिन के राज्य समन्वयक रह चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके अनेक विषयों के अनुसंधानीय पेपर प्रेजेंटेशंस हुए हैं। अनेक संगोष्ठियों के एवं कार्यशालाओं के आयोजन समिति के सदस्य रह चुके हैं। अनेक कार्यक्रमों में अतिथि वक्ता के रूप में अनेक विषयों को प्रस्तुत किया है। सामाजिक स्तर पर सामान्य लोक रूढ़ी में आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रसार हेतु अनेक गतिविधियों का सफल आयोजन भी किया है। जैसे थेऊर के अष्टविनायक गणपति मंदिर में सामाजिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों के आयोजन इत्यादि भी उन्होंने बहुत यशस्वी तरीके से किए हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ से भी इनका जुड़ाव काफी प्रभावशाली हुआ है। 2012 से 2014 तक पुणे जिले के दैनंदिन संकलक रहे हैं। 2015-2016 तक आयुर्वेद व्यासपीठ पुणे जिला के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
2017 में आयुर्वेद व्यासपीठ पुणे जिला के उपाध्यक्ष थे। इसी के साथ 2017 से सायन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, शिव इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ऑफ आयुर्वेद सीफा सिंगापुर के परामर्श सदस्य भी रह चुके हैं। 2022 में हुए विश्व आयुर्वेद परिषद के रोग निदान संभाषा में वे क्षेत्रीय समन्वयक भी रह चुके हैं। तो ये सब सर का परिचय है। और आज का जो टॉपिक है वो आयुर्वेद के फील्ड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो सर का टॉपिक है वो आज स्पेशली बैंगलोर सिटी जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पे वैद्यों को अपना टेक्निकल नॉलेज अप टू डेट रखना पड़ता है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो कृपया शुरू कीजिए। नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवरों का और सर्वप्रथम आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलोर शाखा ने मुझे आज इस टॉपिक पे बोलने के लिए प्रोत्साहन दिया और एक मंच खुला करके दिया, इसलिए मैं आपका सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। और हमारे सीनियर गुरुवर्य वैद्य मल्हार जोशी सर, आपके आशीर्वाद के साथ आज का ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है मैं शुरू करता हूँ। ये जो टॉपिक है इट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत इसके बारे में हमारे बीच में बहुत जागरूकता आना जरूरी है, क्योंकि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज होती रहती है, तो उस टेक्नोलॉजी को हमें साथ में लेना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत दिनों से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बहुत चीजें हमारे सामने भी आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम डिस्कशन। When you hear the word artificial intelligence, what is the first thing that comes to your mind? Yes? रोबोट्स। डॉक्टर विक्रम जी कह रहे हैं रोबोट्स। ओके, वो तो बचपन से हमें रोबोट्स के बारे में बहुत अट्रैक्शन है, राइट? एनी मोर कमेंट? ओके, only one comment is there, robots. So let's see some things about the artificial intelligence. So there are many driverless cars available. Even you are doing Amazon shopping, when you are using Netflix, there is a Netflix movie recommendations. Yes, robots, and probably even the trading software will help investors to make a decision. Here are some examples that related to artificial intelligence. Many among us think of that the artificial intelligence is in healthcare as a buzz or a word or just a concept that will fully develop in the future, but has no impact right now. That this is our thinking. Let's see some other household examples of current day technology that use in artificial includes. These examples are Siri, Alexa, and Google. I think many of us you may aware about these examples. These are popular about the speech recognition software. What they do, they recognize the speech, voice, or commands given by us, and they act for us. So this is the one type of the artificial intelligence. Which AI technology in healthcare have you seen or heard? The next question for you. Or what examples of artificial intelligence have you been amazed by recently or you are working? You can message me about this also. Which AI technology in healthcare have you seen or heard? Robotic surgery, very nice. Knee joint replacement. Okay. Yes. Many apps available. Okay. The any specific app, do you know? Okay, some machines. Okay, but machine is different
than the artificial intelligence. Recently, Alexa is, I think you know better now, because there you can see the ads about the Alexa. Recently, Alexa was clear to handle patient information. You know Alexa, that it listen your commands, and Alexa can switch on the light, switch off the uh, fan, or they can assist you to hear good songs for you. So these are voice commands used for the Alexa for the entertainment purpose. But recently, Alexa is used to handle the patient information. It is nothing but the assistant available in your hospital. So in future, Alexa can handle your patient. The consumer devices such as Alexa and even wrist watches from Apple and other manufacturers are paving the way for how consumer devices will function with artificial intelligence in providing healthcare and wellness data to healthcare for and inform healthcare decisions of billions of people across the world. Many industries are already using artificial intelligence. What about the medical system? So there are human resource management, software development, finance, even the legal field has found uses of AI. What about the medical system? Yes. And what benefits does healthcare system currently derive from the AI? This is our topic. I think you may have gone through these news. If you are reading the news, or you are interested in listening the news channels, you may be heard this news. Will artificial intelligence take over healthcare jobs, or the dawn of the artificial intelligence that chat GPT enters into the codes, or there is a job loss because of the entry of the artificial intelligence? What will happen if artificial intelligence is used in the healthcare? In Ayurveda, we can't use, no need of this. There are many things that we are hearing. But recently, when we asked the artificial intelligence that will digital health technology replace physicians, then artificial intelligence itself gave one answer, that is I am putting in front of you. So here one image in front of you. So there are four quadrants. The upper quadrant is very safe nowadays, and the lower quadrant is at a risk, but it is not a risk. So you can see this, the lower left quadrant, the repetitive, a large part of the job is the same every day. In this health system, there is a repetitive part. So that system is at the risk of the artificial intelligence. So recently, as per the artificial intelligence, dermatology, ophthalmology, and radiology, these branches are hijacked by the artificial intelligence. Don't worry, it is not the hijack, but as we see, the technology always help us. So it might be possible that artificial intelligence will help these pathies very nicely. So this is not a risk. We don't know anything. We can't say anything about this. And what about the other pathies, other health systems? So in digital health technologies, there is a very limited role in professionals. That is, these are auxiliary tools. So that these are the geriatric, dentistry, and pulmonology. So these are at the lower risk. The interaction where happens, that talking with the patient in person or remotely, that is most happens in the psychiatric or in general practice or endocrinology. So these fields will not affect. But what about the creative? That everything new happens every day in this field. Which fields? The sports medicine, pediatrics, oncology, emergency medicine, pathology, surgery, plastic surgery. So this professional will be heavily dependent on the artificial intelligence. So where is our Ayurveda and Panchakarma?
So it is also at the lower side. So if we use artificial intelligence for our pathy, it will definitely help us. So let us first we will understand what is artificial intelligence. In computer science, artificial intelligence, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by machines in contrast to the natural intelligence displayed by humans and animals. The term artificial intelligence is used to describe machines that mimic cognitive functions that humans associated with other minds, such as learning and problem solving. So, which are the terminologies used in artificial intelligence? Many between you may be aware about this, but we will go through this. That is the algorithms. So, what is algorithm? The algorithm is a set of unambiguous instructions that a mechanical computer can execute. Many intelligence algorithms are capable of learning from data and can themselves write other algorithms. So algorithm, you can understand it in a short. It is a formula. We know that a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is the one formula. So algorithm is just a formula. We will look about the algorithm in next slides. So the next is a machine learning. It is an application subfield of artificial intelligence that provides system the ability to automatically learn, improve from experience without being explicit programmed. So machine learning is not a difference, no different than the human learning. It is same. I will explain you in next slides. These terminologies are little bit hard, but very simple to understand. Neural networks, the artificial neural networks known as the ANN, are computing system vaguely inspired by the biological neural networks and nodes called the artificial neurons. Each connection, like the synapses in the biological brain, can transit a signal from one artificial neuron to another neuron. So what is this? So this is nothing but like a human brain. You know that neurons are present in humans exactly like that. These neurons, artificial neurons, are developed, and when these neurons are interconnected, this is known as the artificial neuron networks. We will see some examples in next slides. Then data mining. It is the practice of examining large pre-existing databases in order to generate new information. So what is data mining? This is a very simple. As we know that we are having many mineral mines available in India. हम कोल निकालते हैं, हम बहुत सारे मिनरल्स गोल्ड निकालते हैं. तो ये सब जो रहता है अर्थ के इनसाइड रहता है. तो हमें सिर्फ वो लोकेशन ढूंढना पड़ता है. उसके बाद में we start mining, and which part is useful for us, we dig it out. So just like that, there is a huge data available in the network, but artificial intelligence uses its intelligence, and it does, or it exactly create a content for us from the important data, or which is important for you. So this is nothing but like a mining. Cloud technologies. Cloud computing refers to the use of a network of remote servers to store, manage, access, and process data rather than a single personal computer or hard drive. So in artificial intelligence, we require huge data, and this data is stored at a cloud places. And these cloud technologies are interconnected. So whenever you are typing any words in artificial intelligence platform from your mobile or from your laptop or your tablet, so it gets connected to the cloud, and it recover data which is required for you. That is the cloud technology. So there are some types of artificial intelligence. That is a weak artificial intelligence, strong, and super intelligence. So this is just words meaning. So there is a weak means it is a non-sentient machine intelligence, typically focus on a narrow task, and the strong, which is used for the huge task, and super intelligence, the artificial intelligence for surpassing that of the brightest and most gifted human minds. Due to recursive self-improvement, super
intelligence is expected to be a rapid outcome of creating artificial general intelligence. जैसे हमारे आयुर्वेद में भी दिया हुआ है हीन, मध्यम और उत्तम, जैसे उसी के तरीके से ये भी टाइप है हीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मध्यम और उत्तम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम आयुर्वेद लोगों को समझने में कोई आसानी नहीं है, आयुर्वेद पढ़ने वालों को जल्दी से समझ में आता है. So let's see how data is provided to. We will just understand how machine learning takes place in which way. So in front of you, you can see a picture of a baby. So just text me a message or just unmute and say yes, you are seeing a baby. Can you tell me the name of that baby? Or she Indian or foreigner? Yes, please. Foreigner. Okay. Okay. The baby is foreigner. So this baby is, we can consider is of 1 year old. Okay. So the baby's learning process is started. So how? So there is another picture in front of the baby, that is a cow. Okay. So now we are giving input to baby that this is a cow. So baby learn how it looks. So that cow has 4 legs. The cow has a tail. The cow has a specific head structure. Then we will show the next picture. The another picture is of horse. Now the horse is also having 4 legs, a tail, a head. But the baby understands the difference between the horse and the cow. So we provide some another inferences like the shape of the tail or the shape of the legs of that 2 animals, the difference between. Then we will add one input like the sound of the animal when it runs or walk. Like when a horse is running, the tuck 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 sound is coming. So that baby will adapt these things, and the brain will learn these things. Likewise, the more confusion for the baby, 4 legs, 1 tail, and the head structure. But again, the difference is that horse can run very fastly, but the donkey cannot. The voice of the horse is different, and the voice of the donkey is different. So हम उसको ये भी बताएंगे कि जो बच्चा एकदम तेज होता है, अच्छा होता है, घोड़े जैसा दौड़ता है, और जो कुछ डोंकी जैसा होता है, गधे जैसा होता है, ये भी हम उसको समझाते हैं. Then we will add one more confusion, the same like 4 legs, 1 tail, and the head structure. Again, the baby has to differentiate about in the both structure, in the both pictures. Now again confusion. There are many pictures, same 4 legs, tail, and the same head structure. So we will give some input to learn that baby how these animals are different from each another. Like you can see the types or name of the horse. This baby will not understand immediately, but after some processing or as that baby will grow, so it will that baby will learn. So we were at this point that the baby is now learning how to differentiate the animals. So now, can baby identify this? Yes or no? You can write in chat box. Whether baby can identify this? Yes, yes. Okay. So this is the same process we can adopt for the machine learning. So whatever available us, we can provide this to the artificial intelligence, and that will use itself intelligence and to provide results for you. And this technique is
mostly useful for the Ayurvedic physicians, Ayurvedic health system, because all our data is of this type. So that is why uh, artificial intelligence will improve the Ayurveda, or it will boost up. So artificial intelligence is automated driverless cars. So you know that driverless car, no need of driver, it runs. The automatic recognition of ripening tomatoes by artificial intelligence. Here they uses the robots. That robot grows that plant, then it gives water, then it recognizes the tomato, and they take it from the plant, and also they took to the take to the market. So all this procedure will be done by the robots only. In Japan, this is the fourth rank in the world in 2016. That 303 robots were installed, and for the 10,000 employees. So these robots are doing the job of the person. We can see the timeline of the artificial intelligence in health. So here we can see in 1955, this term is coined by the John McCarthy, and it was founded as an academic discipline in 1956 in the US. Since that, in 2019 and onwards, here we can see discovery and development of drugs, preclinical research, personalized healthcare, and many more such things. So this is the journey. Sir, voice is not coming again. No voice, sir. Hello. Now you're audible, sir. Okay. So, may I continue from this current slide, or I have to shift to the first? Current slide is fine, sir. Yes. Okay. So these are the many heads on which we can work for the healthcare: patient facing, chatbots, wearable devices, personalized genetics, mental health, information and clinical trials, genetic research, medical imaging. All these parts I will cover in my next presentation. In the short, we will try to discuss all these points. So what is the role of the artificial intelligence in health? So health monitoring. So we can start the monitoring health of the patient, the tools to support intervention and the healthy behaviors. So now there are many wearable health trackers are available, called as a Fitbit, the Apple Garmin, and others. Many exercise they can track our record from all over the 24 hours. So what we can do with our field in Ayurveda? Yes, we can do with our Dincharya, Ritucharya. We can modify some health trackers, like that person wake up in the morning easily. So we can guide him or her to at what time they have to sleep, they have to wake up. So we can also measure the time of the brushing, even the gandush or kaval. We can also that measure. So Dinacharya and Ritucharya, these parts we can develop with the artificial intelligence for the health monitoring. And there are many examinations like Ashtavid Pariksha, so Nadi, Jiva, Mala, Mutra, Shabda, Sparsha, Druka, Akruti. So these are the findings which we require. So
we can also work on this. And many of the, I think, Nadi and Jiva Parikshan examinations. So many scholars are working on this, and these we can see the result of this. The Nadi Yantra is there, the Jiva Pariksha app is there. One doctor from the Jaipur or Raipur is working on a Butra Pariksha, the Telebindu Pariksha. So we can convert these techniques into the artificial intelligence. So medical chatbots can offer relevant, high-quality information, the reassurance, answers, and way of thinking about the situation related to human behavior. So what they use in this, they use the person who is confused or who is not aware about his her disease, and they are thinking how to confer this situation. So here they have developed that chatbots to guide that person. So we can also work on our Panchakarma procedures, so Nasya procedure, Uttarbasti, Shara Sutra, to give the guidance to that person that they can be aware about this. Because in we can मतलब जो भी जन समुदाय है उसमें इतना सारा कंफ्यूजन होता है. अभी जैसे मैं एक गवर्नमेंट अस्पताल में काम करता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं. कल ही मैं एक कोर्ट में गया था, तो वो लोग पूछते हैं व्हाट इज दिस आयुष. तो आयुष मिनिस्ट्री मतलब क्या है. तो सच में इसका अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है. सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस मेडिकल चैटबॉट सिस्टम. वी कैन use chatbots for our Panchakar to provide the Panchakarma information in a very smooth manner. Early detection. According to the American Cancer Society, a high proportion of mammographs yield false results, leading to 1 in 2 healthy women being told that they have cancer. So the use of artificial intelligence is enabling review and translation of mammograms. That is the 30 times faster and with the 99% accuracy. So Google's DeepMind Health is working in partnership with clinicians, researchers, and patients to solving and detecting real-world healthcare problems. So we have to work for the early detection. So how we can work in our Ayurveda field? As we diagnose the disease, there are many types, like doshaja types, vataja, pittaja, kaphaja, vataja kas, pittaja kas. Even there are atisar, vataja atisar, pittaja atisar, kaphaja atisar. So can we find the exact pittaja atisar type, kaphaja atisar type? So we should have to develop some procedures to detection of the doshas. So if we can find Vataj, Pittach, Kaphaj, then we can also do treatment according to it. I have tried this in my PhD research work. I will explain it in next slides. So early detection is very important. Examples of artificial intelligence in medical. That is, what is the role of artificial intelligence of medical imaging analysis tools? We will see one by one. Medical imaging analysis tools. These tools can help the radiologist to detect diseases and abnormalities in medical images more quickly and accurately. So, for example, the AI-powered system DeepMind can detect breast cancer with greater accuracy than human radiologists. I have told you in the one graph previously, radiology is the health system that is totally grabbed by the artificial intelligence. So what do you think that radiology doctors we don't need it for in the future? It is not exactly like that. We need assistance for this. Not we cannot replace the doctors. So diagnosis, the company like Zebra Medical Vision developed a new platform called Profound, which analyze of all types of medical imaging reports. So I will add the one point that I have given many examples for this. And if you are interested in artificial intelligence,
So you should just note down these words and search how they are working, what are the techniques they are using for this research. So medical imaging is a very vast field used for the artificial intelligence. Now the dermatologist, the AI trained a convolutional neural networks using a data set of 1 lakh, more than 1 lakh clinical images to classify type of cancer. Here, one thing is we have to note that this for this study we required data, lots of data we required, not from the single person or 10% or 100, in a lakh, in a millions, in a billions data. So that how much data you will provide, you will get that much information. And one more thing I have to add here, that till now the data from the Ayurveda side is not available. That much data is not available. That's why our Ayurveda system is not involved in the artificial intelligence till date. Till date. But they are very, very talented people, and they are trying to collect this data for their benefit. So it is a better to use this data by Ayurvedic people, and if we can use this data, we can develop ourselves. So regarding medical images, I want to explain my PhD topic. I will not go into the detail, but this study came into my mind in 2018, and I started to work on this study of त्रिदोषा with special reference to blood color analysis. हमारे आयुर्वेद में एक रक्त वर्ण की परीक्षा दी हुई है. जब हम रक्तमोक्षण करते हैं तो रक्तमोक्षण करने के बाद हम वो रक्त को देखते हैं और देख के उसका वर्ण देखते हैं, और वर्ण देख के हम बताते हैं इसमें वात दृष्टि है, पित्त दृष्टि है, कफ दृष्टि है. तो अगर वात दृष्टि है तो ब्लड हमें ब्लैक दिखता है, पित्त दृष्टि है तो पित्त दिखता है, और कफ दृष्टि है तो श्वेत वर्ण होता है. ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं चरक सुश्रुत वाग्भट में. सो इसी टॉपिक को मैंने पिक किया, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अलग अलग यहाँ पे ब्लड सैंपल्स हमने लिए हैं. नीचे आपको एक पेपर दिख रहा होगा, उसमें भी कुछ कलर्स है. तो वो जो कलर्स है उसको हमने आइस से कंपेयर किया. उसके बाद में हमने यहाँ पे मोबाइल फोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने जो आपको बताया था ना, मशीन लर्निंग, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और 2-3 एल्गोरिदम्स. तो ये सब एल्गोरिदम्स हमने यूज करके वात, पित्त और कफ ब्लड को देख के, ब्लड की इमेज लेके, क्या हम इससे इस रुग्ण में वात कितना बड़ा है, पित्त कितना बड़ा है, कफ कितना बड़ा है, ये बता सकते हैं. सो this study is under evaluation in university, so I cannot disclose the results, but very soon I will explain it. And if you are interested, so you can contact me anytime, we can discuss on this. इस टॉपिक पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं आगे चल के. So anytime you are welcome. One thing I want to share with about my result, that there are millions of color shades available. They are approximately around 176,77,216. These are the exact color values available. So all these color shades you are seeing on the PPT. So each color shade has a different name, specific name. So out of these shades, I found 1,81,780 shades of the red color, out of which I found 77,517 shades of the blood color. Out of these, I found 1,584 shades of the healthy blood color. So why it is healthy and unhealthy? So it's simple. जो मैंने सैंपल लिया था उसमें वात, पित्त और कफ ये लेना बहुत ही मुश्किल था. इसके लिए बड़ा स्टडी लगता है. तो सबसे पहले मैंने ये किया कि हम हेल्दी ब्लड, जिसमें वात, पित्त, कफ का प्रकोप नहीं हुआ है, ऐसा ब्लड, और जिनमें वात, पित्त, कफ का प्रकोप हुआ है, ऐसा अनहेल्दी ब्लड, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस मिलता है, ये हमने यहाँ पे चेक किया. और जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने टाइप्स ऑफ द
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे, हीन, मध्य और उत्तम, यस, वीक, स्ट्रॉन्ग और सुपर इंटेलिजेंस। तो अगर जैसे ही हम इसको सुपर इंटेलिजेंस अगर हम यूज करते हैं तो ये डेफिनेटली हमें वात, पित्त और कफ की भी परसेंटेज बता पाएगा। एंड इन दैट लास्ट 84 shades of the unhealthy blood color I found. So this is a very big study and very innovative type of study about the three dosha and the blood. So we will move next, the clinical decision support system. This system can help clinicians to make more informed decision about the patient care. For example, the AI-powered system at Sun Oncology can help oncologists to choose the best treatment plan for each patient based on their individual genetic and molecular profile. This system is also available in our Ayurveda. That what we do, we prescribe the medicine according to the prakriti of the patient. So each person has a different prakriti, and that's why clinical decision support system will be a helpful for us. Drug discovery tools. These tools can help researchers to identify new drugs. So, for example, the AI-powered system Essentia has been used to develop a new drug for the treatment of type 2 diabetes. So, dear friends, in Ayurveda, we studied around 300 herbs, but in the world, we have more than 1500 species. So, what about these drugs? So, we can use artificial intelligence for study of the another herbs. Personalized medicine tools. These tools can help clinicians to tailor treatment to the individual needs of each patient. For example, the AI-powered system CancerSeek can be used to develop a personalized cancer screening plan for each patient based on their individual risk factors. So, role of intelligence in health, someone of you was mentioned, the AI robot assisted surgery. Robots have been used in medicine for more than 13 years. The surgical robots that can either aid a human surgeon or execute operation by themselves. They are also used in hospital and labs for repetitive tasks. So, for example, AI-powered surgical robot Da Vinci is used to perform a variety of surgery, including prostatectomy, hysterectomy, and gallbladder removal. Da Vinci, you can remember the name. The wearable devices. AI-powered wearable device Fitbit can be used to track a person's heart rate and activity levels to identify potential signs of heart. अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं फिटबिट, तो आप इसका 4th जनरेशन मार्केट में आया हुआ है। मतलब जब तक हम कोई नेक्स्ट लेक्चर अरेंज करते हैं या नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तब तक इसका नया वर्जन आ जाता है। मतलब इतना फास्टली ये सब ग्रो हो रहा है। दैट फिटबिट इज अवेलेबल अराउंड 24,000 or 25,000. Novel approaches to healthcare using artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence for diabetic retinopathy. Using artificial intelligence for digital retinopathy screening will allow non-clinicians to be trained. मैंने आपको बताया था रेडियोलॉजी के बाद में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला और एक हेल्थ हमारा सिस्टम है, दैट इज द ऑप्थेल्मोलॉजी. द ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच विल बी अफेक्टेड मोर. Around 20 to 25,000 people get blindness every year. The diabetic retinopathy is an eye condition that can cause vision. We all know this. Dr. Abramov and his team will design a robotic camera with an algorithm can detect the retinal diseases. So we can use this robotic camera for our treatment also with Ayurvedic inputs. In cancer, the Peter McCaffrey designed a DNA analysis using machine learning. His focus is on immuno-oncology, a treatment system that uses the patient's own immune system to attack cancer cells and beat them and suppress the tumor as it goes forward. The AI assistance for the cardiology. Dr. Richard Chung used artificial intelligence home monitoring remote biosensor that can be easily integrated into a system. This process allows physicians to gather more information in an efficient manner where the data is filtered and presented effectively so that the physician can quickly transmit instruction digitally. यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ
आप लोगों ने ये देखा होगा कि आजकल अगर हमने कभी भी सिग्नल तोड़ दिया या हम लोग ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे घर पे एक चलन आता है, मोबाइल पे मैसेज आता है, यू आर फाइन फॉर द 2000 रुपीज और वॉट एवर 500 रुपीज। आपने पुणे में है और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको 500 का फाइन लगने वाला है। ये कैसे पता चलता है? तो जो कैमरा रास्ते पे लगे हुए हैं उसका एक सेंटर रूम रहता है, ट्रैफिक जो पुलिस स्टेशन है उनके यहाँ उसका स्क्रीन रहता है और वहां पे एक जो पर्सन है वो असिस्ट करता है और जैसे ही उनको दिखता है कि सिग्नल इसने तोड़ दिया वो फाइन लगाता है। सेम थिंग्स विल हैपन फॉर द कार्डियोलॉजिस्ट। सो they will put one device on your hand, on your chest, wherever they will put this and they will access it from their hospital. So whenever there is a chance of cardiac arrest or any cardiac risk, they will inform you on your phone or any type of alarm is there and they will directly send a helicopter or something. I don't know what they have a plan. So or what is the next strategy, but यहाँ तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा चुका है। तो ऐसे रूम हमें आगे देखने को मिलेंगे कि पेशेंट खा रहा है, जब भाग रहा है। हम भी कर सकते हैं, हमारे आयुर्वेदिक में क्या कर सकते हैं हम लोग कि रात को 9 बजे अगर कोई खाना खा रहा है तो उसको अलार्म जाएगा आयुर्वेदिक हमारे हॉस्पिटल में से कि, और कोई विरुद्धासन कर रहा है या ठंडी में बारिश में आइसक्रीम खा रहा है तो हम उसको मैसेज दे सकते हैं कि भाई ये गलत है, आप ये मत करो, इससे आपको कल आप बीमार होने वाले हो। So whatever this type of artificial intelligence we can use. Many Ayurvedic physicians are very clever. I am just giving some clues. Okay. Christian Oscar and his team are using voice technology to deliver preventive diagnostic insights. The voice biomarkers can be collected through an office visit or even an over the phone. That is the question answer session. And dear friends, we have a Shabda Pariksha mentioned in our Ashtavidha Pariksha. Shabda Pariksha is nothing but the voice examination. And even if you know कोविड की जो वेव आई थी उसमें कुछ लोगों ने इस पे भी काम किया था, अगर देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन योर वॉइस देन यू मे बी अ कोविड पॉजिटिव, यहाँ तक भी रिसर्च हुआ था। तो आगे चल के हम इसके ऊपर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल द डिजिटल हेल्थ फर्म हेल्थ ऐप डेवलप Dr. AI and apps like Babylon in the UK use AI to give medical consultation to making the decision. The treatment design, the precision medicine. तो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट डिजाइन है इसको हम आयुर्वेद में कैसे ले सकते हैं? तो हमारे यहाँ 2 तरीके की ट्रीटमेंट दिए हुए। देयर आर वी हैव मेंशन सामान्य चिकित्सा एंड विशेष चिकित्सा। वी कैन कैटेगराइज दिस। द विशेष चिकित्सा इज नथिंग बट द प्रिसिजन मेडिसिन and with the help of this we can formulate the new drugs. So this we can mold artificial intelligence in Ayurveda this way. These technologies such as genomics, biotechnology, wearable sensors or artificial intelligence are gradually leading to 3 major directions. They have been making patients the point of care, one thing, and the second is created a vast amount of data that required advanced analytics. And the third one is made the foundation of the precision of medicine. The first thing is point of the care. हमारे यहाँ दिया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम. It is nothing but the care. तो हमें क्या करना है, पेशेंट का स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम या आधा आयुर्वेद हो गया, तो इसमें ही हम बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। The medication management, improving client adherence. The National Institutes of Health has created the AI Cure app to monitor the use of medication by a patient. The smartphone's webcam is prepared like that it can confirm that the patient is taking a medicine or not. If he has missed that medicine or something, they can collect that data from this. Now the public health. In public health, there are many work done on the water treatment. So if that water is pure or not, that can be diagnosed by this. The Semantic MD aims to scale its AI solution to provide low-cost, accessible TB detection to vulnerable population, particularly throughout South Asia, China, Africa.
like this. The solution integrates with X-ray devices to work. It can be accessed from the cloud. So in TB, we must check the chest X-ray. So this artificial intelligence is work on the chest X-ray. The acceptance and scope of AI in the world. So what do you think? Are you accepting artificial intelligence or no? Yes. Accepting or not? What do you think about the future investment? Is there any? We have to accept, no other choice. Okay, okay. Yes, No, we no, have to accept no other choice. no, we have a choice. We have a choice. We have to take this to a proper direction. Okay. What about the future investment? Is there any chance of future investment? Yes, I have given many examples. If we invest in AI and Ayurveda, yes, there is a lots Many of money you can earn. many IT sector people are coming up with different applications on this, trying on applying Ayurvedic diagnostic methods in diagnosis of different kind of patients. Yeah, right, right. So But don't give this chance to them. We have to interfere with they them. are We have to ready to make a invest. collaboration. Ayurvedic people are not ready to invest. No, no, that's why we are making awareness in our people. Yes, sir. This awareness is very much needed. Thank you for giving Yeah, yeah, all yeah. these Definitely. information. Yes, ma'am, yes. So, good global summit for artificial intelligence. The AI for Good Global Summit took place at ITU in Geneva, Switzerland on 7 September on 7 or 9 June 2017. That was organized by ITU and the Jeffries Foundation in partnership with 20 UN agencies. This summit discussed how artificial intelligence could follow a development course able to assist the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. The countries with AI in its national strategies. इंडिया इसमें है क्या दिख रहा है आपको? Countries with AI in its national strategies. Yes. है ना इंडिया? The investments in artificial intelligence, according to the research firm Aligned Market Research, the AI in medicine market was valued at almost $719 million in 2017 and is expected to reach around 18,119 million at the end of the 2025. One analysis has found that the use of AI applications could result in approximately $150 billion in healthcare cost that will save. Where is India? India's AI market to reach USD dollar $7.8 billion by 2015, says IDC latest report on AI. Here are some graphs that showing some important points about this is the Indian AI market projection, the current Indian AI market size and projection. So you can see 12.3 billion AI generated revenue in India in 2023 and the 71 billion AI market size in India expected in 2027. तो इसमें से कुछ जो है वो हमारे भी होनी चाहिए. Indian AI market share of non-IT sectors. So non-IT sectors here you can see the healthcare, the pharma and healthcare. The third one, this is adoption of AI in Indian enterprises across sectors. Almost 50% pharma and healthcare accounts for 50% of AI adoptions. What is the percentage of AI enterprises that have adopted AI capabilities? More than 74 for the deep learning.
The top skills for AI professional possesses. Which are the top skills? The 72% of AI professionals can interface with database through basic query language like SQL. Almost 2 in 3 AI professionals can work on or have a good understanding of deep learning. So deep learning is the uppermost stage of the AI. Share of open AI jobs across non-IT sectors. They are opening a very almost 22% market share for the health and pharma. AI has the potential to revolutionize the medical health system gaps that need to be bridged. Some of the key challenges include data availability and quality. This is the most important point. Data availability and quality. कितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी कंपनीज हैं उन्होंने कितना भी किया फिर भी वो विदाउट डेटा कुछ नहीं कर पाएंगे. इसलिए डेटा तो हमारे पास है तो वो जो डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी क्वालिटी के ऊपर ही यह आगे जा सकता है. एंड वन मोर थिंग इज ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी. अगर आप एक्सरे देख रहे हो, अगर आप नाड़ी देख रहे हो, नाड़ी आप चेक कर रहे हो, आप जीवा देख रहे हो और उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत है, उसका ट्रांसपेरेंसी ही गलत है, तो ये वहां पे काम नहीं करेगी. तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द इथिकल कंसिडरेशन. तो वी ऑल doctors are abound for the ethical practices. To bridge these gaps, we need invest in data collection and infrastructure. सबसे ज्यादा हमें डेटा कलेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना जरूरी है. देन डेवलप मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंटरप्रिटेबल एआई एल्गोरिथम. हमें ऐसे एल्गोरिथम डेवलप करने हैं जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम नाड़ी चेक कर रहे हैं और हमें वात पित्त और कफ इनमें से वात की नाड़ी लग रही है और हमने गलत इंटरप्रिटेशन दे दिया, पित्त की नाड़ी लग रही है. जो मैंने आपको जो एक बच्चे की तस्वीर दिखाई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चा लर्न कर रहा है. उसी तरीके से ये मशीन लर्निंग में अगर वो मशीन को लर्न करते वक्त हमने गलती से वात की नाड़ी की जगह पित्त दे दिया तो इन द एंड प्रोडक्ट लास्ट में वो हमें गलत रिजल्ट देंगे. सो हमें ये ट्रांसपेरेंट और इंटरप्रिटेबल बहुत रखना जरूरी है. ये सब चीजें आने जरूरी है. एंड एड्रेस द इथिकल कंसर्न्स. In addition to these technical challenges, there are also a number of cultural and organizational challenges that need to be addressed in order to bridge the gap between AI and the medical health system. For example, healthcare professionals need to be trained on how to use AI effectively. This is the main concern. हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उतने बिजी है हमारे प्रैक्टिस में, हमारे अध्यापक लेक्चर लेने में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने में, वो सीखेंगे कब? तो ये हमें सीखना जरूरी है. और लास्ट ईयर से अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर में जो बच्चे बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको एनसीआईसीएम की तरफ से कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए गए. जैसे कि हमने जब बीएमएस किया था तो हम कुछ अलग नहीं कर पाते थे, कुछ अलग सीखना है तो नहीं सीख पाते थे, हम बाद में कुछ कर सकते थे. लेकिन अब बीएमएस के करिकुलम में इसको ले लिया गया है. इसके वजह से अभी हमारे जो लास्ट ईयर के बीएमएस के बच्चे उनमें से अराउंड 5% और 10% बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट इलेक्टिव करके लिया था. तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिकली एज स्टूडेंट लेवल से आने वाला है. Despite the challenges, there is a growing interest in using AI to improve healthcare. A number of AI-powered medical devices and software applications are already being used in clinical practice. As AI technology continues to develop and mature, we can expect to see even more innovative and impactful application of AI in healthcare. The synergy of humans and technology. The collaborative approach, doctors and digital health technology can work together synergistically to provide optimal patient care and the outcomes. And the augmented decision making, physician can leverage technology for data-driven insights, enhancing their clinical judgment and the decision. And empathy and the trust. The human touch in healthcare is irreplaceable, nurturing trust and comforting patients during the medical journey. So, what about the Ayurveda? What should be our approach? Improve the diagnosis of Ayurvedic diseases.
develop personalized Ayurvedic treatment plans. We can work on the predict the risk of the developing Ayurvedic diseases. We can improve the efficacy and safety of Ayurvedic medicines, and we can also make Ayurveda more accessible and affordable. Here are some specific examples of how AI is being used to improve Ayurveda. अगर आप में से किसी को कुछ पता है तो आप मुझे बोल सकते हो. जस्ट मैं पानी पीने के लिए एक जस्ट हाफ एन मिनट का ब्रेक लेता हूँ. तब तक आपको जो जो कुछ नाम पता है आप मुझे बता सकते हो. Some examples being used to improve Ayurveda. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो. टेक्स्ट मैसेज कीजिए. Yes. Any examples you know? Yes, Prakriti analysis. Right. Let's see. Ayur AI. Ayur AI is a deep tech company that is using AI to develop personalized Ayurvedic solutions. Ayur AI's platform collects data from patients on their diet, lifestyle, and symptoms. This data is then used to develop personalized Ayurvedic treatment plan for each patient. Ayur AI. Next one is Ayurdoc. Ayurdoc is an AI-powered mobile app that provides Ayurvedic consultation to patients remotely. Ayurdoc uses a variety of data resources, including the patient's medical symptoms and lifestyle, to generate a personalized Ayurvedic diagnosis and treatment plans. RASoft is a software company that develops AI-powered tools for Ayurvedic practitioners used to diagnose Ayurvedic diseases, develop personalized treatment plans, and predict the risks of the developing Ayurvedic diseases. हमें लग रहा था कि AI का कोई भी यहाँ तक यूज नहीं हो रहा है. अरे हमारे तक तो कुछ भी नहीं आया अभी तक, लेकिन ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है. Ayusoft decision support system in Ayurveda was developed by the CDAC Pune, where Ayusoft software was developed for Prakriti diagnosis. AI in phytomedicine. CCRS has collected nearly 33,700 references on the 16 selected medicinal plants. These AI models are popularly used for the applications like comparing herbal components, clinical data of patients, and the prediction of pathways and the prescriptions. The algorithms evaluating herb-induced liver toxicity and ontology based on AI models for side effect prediction are reported. The hierarchical alternative neural network model can capture herbs in a prescription to their efficacy. Deep learning methods have been used to characterize patterns of food-enriching and blood-enriching herbs to suggest prescriptions by analyzing big data resources. Such AI insights will be leveraged for R&D in developing new phytomedicines for food products. So this work is done by the CCRS. This is the Central Research of Ayush Ministry. They are having almost 14 offices in India. So where is our Ayurveda? So Traya Sutri of, we can see here. So we have one side human data and the another side the therapeutics. The dosha, agni, mala, dhatu, prakriti, oja, etc. data derived from the human data, and the therapeutics, rasa, virya, vipak, guna, diet, panchakarma, dinacharya, ritucharya, and the third one is the disease data. And to making a bridge in between this, we can develop artificial intelligence using this Traya Sutri. So what are the new things in Ayurveda? The three Prakriti identification, dosha, Dhatu's level, malas, three malas level, the Srotas disturbance identification, Agni disturbance identification, the Jarana Shakti, Oja identification, level of the Oja, many things are there. We can work on them. New things in Ayurveda, that is examination, the pulse, so Nadi examination, we know
Nadi Pariksha, the stool, the water examination is given, the smell of the stool, then about the urine, the Tel Bindu examination is given, then tongue, the Jiva Parikshan demo. So there is one mobile app available, so from which you can diagnose the symptoms, conditions, or disease by clicking the picture of your tongue or the patient tongue. The Shabda, voice recognition, Sparsha, touch sensation, fever, this etc. We can see. Eyes, by using the picture of the iris, retina, image analysis we can use for the eyes, and the Akruti, the body scanning. So can we develop such instrument which can scan the body and the tail, which dosha is present, which is increased, what is the status of slotas, which slotas is disturbed, what is the level of Agni, all such things we can develop in our Ayurveda. In pulse, the Nadi Tarangini app and the Nadi Swara. These two are developed. The Nadi Tarangini is the AI-based instrument that the diagnosis system, as per the principles of Ayurveda, to provide a pulse report of 20 Ayurvedic parameters. And this is developed by Dr. Aniruddha Joshi. And the pulse diagnostic device, Nadi Swara, will give a scientific, quantitative, and measurable approach for the ancient traditional treatment techniques by using the combination of hardware and the machine intelligence software developed by Baswa Prachit Vaidya. So these you can find more information on net. It is available. So here this is the one test given about the breast milk. So what we do, we use one drop of breast milk in the water, and we can see the speed, the color, the time we can measure, and we can develop any test. So now one of my PG student is doing a study on this project, that to identify the dosha present in the breast milk. So she has captured this video. We were doing one pilot study at that time. So you can see how the milk is dissolved in the water. So all these things are captured in a camera. So we will check some examples. Then we will retrieve data. We will retrieve information. We will ask artificial intelligence to give the findings from this test. So how we can collect data? We know the smell sensation, taste sensation, touch sensation, sight sensation, and the hearing sensation. Pancha Jnanendriya. So Pancha Jnanendriya work for us to receive data from the patient. And what type of data we get? Gandha, Rasa, Sparsha, Rupa, Dhvani we get. So use the latest instrument and the parameters for this. So which are these? Yes, there are sensors which can detect and sense odor or smell. They are sometimes also referred to as an electronic nose. The basic idea is to detect the chemical constituents that contribute to the odor to the substance. The sensor surface consists of material that could respond to the odorous compound differently. So we can use this smell sensation. One example, आप लोग हम लोग देखो टॉयलेट में या हमारे रूम में रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, या फिर टॉयलेट में एक स्मेल का पाउच आता है, अलग अलग स्मेल होते हैं, तो उसमें आप कभी उसको देखिए, पढ़िएगा उसको, तो उन्होंने दिया है वहां पे एक लाइन दी है कि डैश 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 मिलियंस ऑफ स्मेल्स आवर नोज कैन स्मेल. मैं अभी आपको नंबर नहीं बताऊंगा, आप ढूंढिए उसको, तो मिलियंस में हो, तो उतने स्मेल्स अवेलेबल है. तो हम तो गंध परीक्षा करते ही हैं, वनस्पति का करते हैं, दोषों का, मल का, शरीर का, बहुत सारी चीजों का करते हैं, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं. The taste sensation. A taste sensor is required to exhibit global sensitivity
so that it responds constantly to the same taste similarly to the human tongue. After years of research with Professor Toko's group at Kyushu University, Japan, they have successfully developed taste sensor based on an artificial lipid membrane that consistently respond to a similar taste. So this is the electronic tongue. हमारे यहाँ दिया हुआ है, रस दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें उनका हम टेस्ट नहीं कर पाते. कैन वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट? यस, थिंक फॉर दिस. टच सेंसेशन. टच सेंसर इज टू डेवलप एग्जाम नाड़ी परीक्षा. नाड़ी यूजेस हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने आपको बताया, यूजिंग 3 बेसिक सेंसर्स टू रिकॉर्ड द पल्स ऑन द wrist at Vata Pitta Kapha location. It mimics the way of Vaidya takes Nadi Pariksha. In this, they use a sensor technique. There are some sensors which can detect the movement. How to work? अभी हम बहुत सारे वैद्य हैं, जैसे मैं पुणे में या यहाँ ज्वाइन होने से पहले एक 8-10 साल प्रैक्टिस करता था. तो प्रैक्टिशनर्स के अलग कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. हम अभी एकेडमिक में हैं, तो हमारे एकेडमिक के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री चला रहे हैं, डायरेक्टर ऑफिस है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, उनके कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं. तो उनके लिए हमें सोल्यूशन निकालना पड़ता है. हर एक जन अपना अपना सोल्यूशन निकालते हैं. तो हम जो फिजिशियन है, हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे? तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू वर्क, हमें कैसे काम करना है. तो इसके लिए आपको खुद भी कुछ प्रयास करना है, लेकिन एक कुछ आर्टिकल मैं आपके सामने लेके आया हूँ. जस्ट लाइक Kalman filtering and non-linear penalty regression approach for non-invasive anemia detection with the palpebral conjunctiva images. So इन्होंने क्या किया इसमें? They took the photo of the palpebra and after gathering that, collecting that photo, they applied the Kalman filter algorithm. If you remember, I have told you that some terminologies of artificial intelligence. Algorithm is nothing but the formula, the mathematical formula. So they applied one Kalman filter. They have taken one R component in their language or whatever that, and that artificial intelligence gives that algorithm gives them some inferences, some results. So according to that, they were able to check the anemia. तो एनीमिया के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं. वो फिंगर में प्रिक करेंगे, फिर वहां से ब्लड निकालेंगे. पुरानी मेथड थी. लेकिन जहाँ पे हम लोग ये नहीं कर पाते, जहाँ पे हमारे पास केमिकल नहीं, तो वहां पे हम लोग एक टेक्निक यूज कर सकते हैं. सो दे हैव यूज्ड द इमेज एनालिसिस. The smartphone app for non-invasive detection of anemia using only patient source photos. तो इन्होंने क्या किया? पेशेंट के नेल्स के कुछ फोटोज लिए. तो वो फोटो लेने के बाद में सेम उन्होंने इमेज एनालिसिस, इस इमेज को उन्होंने एज अ डेटा प्रोवाइड किया. उस पर उन्होंने प्रोसेसिंग किया, कुछ अल्गोरिदम्स उन्होंने दिए, और उस अल्गोरिदम के इन्फ्लुएंसेस से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स पाए. तो आफ्टर दिस रिजल्ट्स दे रीच टू सम conclusion. And as they develop this, so I think I have covered many aspects, many angles of the artificial intelligence. If you have any doubts, you can ask me. Now we will move to question and answer sessions. Yes, any question? If you don't have any question, or if you don't have any time, you can write me, or you can email me, or you can WhatsApp me. You can contact me anytime. Yes, no issue. Welcome. सभी लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना शुरू करना चाहिए. उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना चाहिए. वैद्य संदीप काळे सर जी ने जो अभी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है पूरी, जैसे तकनीकी जानकारी है, इतनी डेप्थ में हम सभी आयुर्वेद वैद्यों को जो उन्होंने साझा करने का जो
इतना महत्वपूर्ण प्रयास किया है और इतना दिलचस्प तरीके से थोड़ा टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा विषय हम जब सीखने जाते हैं तो आयुर्वेद वैद्यों को थोड़ा सा वो जो विषय है वो थोड़ा रुक्ष लगता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सर ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसके बारे में और एक मैं बात कहना चाहूंगी, जो सर का टॉपिक है रक्त धातु के बारे में, रक्त धातु के ऊपर त्रिदोषात्मक जो विवेचन, सब उसके रंग और उसके जो हजारों जो शेड्स है, हर एक उसकी विविध छटा है रंग की, और उसका जो एआई के माध्यम से एनालिसिस, ये जो टॉपिक है सर का वो भी इतना दिलचस्प लगा। और जो नैदानिक जो परीक्षण है, डायग्नोस्टिक मेथड्स है आयुर्वेद में, जो हम अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा है, तो इसमें एआई एल्गोरिदम हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे, और भी हमारा जो विचार करने का, हमारे आयुर्वेदिक नैदानिक परीक्षण में जो विचार करने का हमारी एक जो दिशा है वो आज संदीप सर ने हमें प्रदान की है, ऐसा मैं बोलूंगी। और दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, मतलब जो अभी आजकल जो एआई का जो वर्ल्ड चल रहा है, ये पूरा विश्व एक बहुत ही गति से चल रहा है आगे, टेक्निकल जो वर्ल्ड है उसमें, और उसमें हमें अगर सब लोगों के साथ चलना है तो वैद्यों को ये जो कंपटीशन है या जो कुछ भी है, ये हमारा आयुर्वेद जो है, जो आयुर्वेद की विशालता है, वो जग के सामने, विश्व के सामने लाने के लिए जो अनादि अनंत आयुर्वेद है, वो हम सब बातों में कहते हैं, लेकिन ये जो विश्व के सामने लाना है, तो सर के ये जो सब व्यूज है, ये जो टूल्स है, जो सर ने हमें जो इतना मूल्यवान मार्गदर्शन किया है, तो ये सभी हमें बहुत ही विचार देने वाला है एक। और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी जो डेली प्रैक्टिस है, डे टू डे प्रैक्टिस है, वो तो है ही, लेकिन हम एआई में क्या क्या कर सकते हैं, क्या आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या और योगदान दे सकते हैं, ये सभी सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया। हम लोगों ने आज तक आयुसॉफ्ट है या फिर टीकेडीएल है, ये सभी डेटाबेस जो है, हेतु लक्षण त्रिस्कंद है, ये सभी आज तक पढ़ा था, लेकिन ये कोरिलेशन हमें आज ही समझा कि ये सब एआई से ही रिलेटेड है। और इसके आगे भी जाके जो अष्टविध परीक्षा जो सर ने बताई, दशविध परीक्षा है, उसके जो डिफरेंट टूल्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलोर शाखा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य संदीप काले सर जी, वैद्य मल्हार जोशी सर के मार्गदर्शन से ही आज का ये सेशन। हाँ बोलिए सर। मेरी लास्ट स्लाइड रह गई है, वो धन्यवाद सर, प्लीज। धन्यवाद आप सभी का। आपने मतलब मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और रिसेंटली एक्चुअली मेरा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इस पे ही प्रेजेंटेशन हुआ था। हाँ, वहाँ पे सब जो थे इंजीनियर के स्टूडेंट थे, और यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा था कि सब हमारे ही है आयुर्वेद के, तो मतलब मुझे थोड़ा इजी लग रहा था। तो लास्ट वाला जो पेपर था मेरा बहुत कठिन था, और ये थोड़ा इजी मुझे लगा, लेकिन विषय समझने में थोड़ा सा कठिन है। तो मैंने प्रयास किया कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम इजी कर पाए। नहीं सर, बहुत ही होती है, हम इसको और जी समझ सकते हैं। Definitely. और मेरा पीएचडी का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत उस पर काम हुआ है, लेकिन वो पेंडिंग होने के कारण मैं उस पर ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाया। सही बात है, सही बात है। लेकिन किसी हाँ, को इंटरेस्ट, लेकिन सर ये व्यू भी जो आपने विषय सामने लाया है, तो इससे हम वैद्य लोग, स्टूडेंट्स लोग उद्युक्त होंगे, उनको भी ये एक दिशा मिलेगी कि इस पे काम हो सकता है, एक चालना मिल गई है सर, एक दोष के ऊपर रोचक विषय के लिए चालना मिल गई है। जो आयुर्वेद के जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर एआई पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तभी जो आपने बोला कि आयुर्वेद में जो डेटा जनरेशन है, सो वी आर लैकिंग दैट पार्ट। यस। तो इसीलिए हम एआई के टेक्निक्स यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। मैंने अभी लास्ट में एक सेशन अटेंड किया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे थे हमें। तो उनको जब पता चला कि मैं आयुर्वेद फील्ड से हूँ, तो उन्होंने मुझे वही बताया कि देखो सर, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें 100 लोगों में से आप अकेले ही आयुर्वेदिक तज्ञ हैं,
तो हाँ। दिस इज द इशू दैट हमें हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो हम इसके डेटा ऊपर ही काम नहीं। नहीं कर रहे। तो मुझे सही थोड़ा बात है अच्छा सर, लगा कि वो मतलब हमारा बचा है साइंस अभी उनके सही बात है, से, लेकिन उसके लिए हमें ही आगे आना चाहिए। सही बात है सर। तो उसके सर लिए आपकी मैं लास्ट यहाँ स्लाइड। उसके लिए सबसे प्रथम मैं आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलोर, आयुर्वेद व्यासपीठ केंद्रीय, हमारे गुरुवर्य वैद्य मल्हार जोशी सर, हमारे सभी मार्गदर्शक विलास जाधव सर जी, हमारे वैद्य विनय सर और सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ। और आपकी शाखा को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि बेंगलोर शाखा में ये बेसिकली जो आईटी का एक हब है, जैसे पुणे सिटी के एग्जैक्टली, यस। साथ में ही बेंगलोर में सब आईटी का है। और सबसे और एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो कुछ आयुर्वेद में बहुत सारे कपल ऐसे हैं कि जो हस्बैंड आईटी इंजीनियर है और हमारे जो वैद्य है जो आयुर्वेद फील्ड से है, तो शायद मैडम बता यस। रही कि उनके वो यहाँ वही कॉम्बिनेशन है। और रिसेंटली मैं जब दिल्ली में अभी गया था, एक पेटेंट पे लेक्चर था, तो वहां पे भी एक टीचर है, उनका भी वैसे ही था कि वो मैडम जो है उनके बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था। तो सबसे ज्यादा स्कोप जो है अब इन्हीं वैद्यों के हाथ में है कि अपने हस्बैंड को आप अच्छे से समझाओ और सही उनके बात है जरिए सर आप इसको डेवलप कीजिए। जी, या सही सभी बात है को सर। धन्यवाद, सबने सर मुझे। आप लास्ट स्लाइड बोल रहे थे, प्लीज आप शेयर नहीं, वही कीजिए। वही धन्यवाद की स्लाइड थी। थैंक यू। अच्छा, वैद्य हमारे आयुर्वेद व्यासपीठ के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है आदरणीय वैद्य मल्हार जोशी सर, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक मार्गदर्शन पर शब्द कहे हैं शुरू में, और सर ने ही संदीप सर का रेफरेंस दिया था। तो आज मल्हार सर के माध्यम से हमें ये एआई का नया दालन हम कह सकते हैं, ये सभी वैद्यों के लिए खुला हुआ है। आई थिंक कुछ लोगों को प्रश्न है। वैद्य स्नेहा ने हैंड रेज किया हुआ था, तो आई थिंक वैद्य स्नेहा आप अपना डाउट पूछिए प्लीज। शुभ संध्या सभी को, मेरा प्रणाम। सर, एआई का जो ये विषय था, मैडम ने जैसे बोला कि ये बहुत ही रुक्ष विषय लगा पहले में, इसमें रुचि लाना थोड़ा कठिन लगा, बट जैसे तैसे थोड़ा बहुत एआई की जानकारी मैं ले चुकी हूँ, पर ये थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है मैं जो कर रही हूँ उस पे। सर, मेरा प्रश्न यह था कि अभी के हम जो वर्किंग जो डॉक्टर्स हैं, हम अपने क्लिनिक में लाइक तो स्टार्टअप बेसिस पे एआई का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर सकते हैं, या फिर हम इस पे अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते, अपग्रेड कर सकते हैं, इसके विषय में थोड़ा अगर आप जानकारी देंगे तो ये जो रुचिहीन जो विषय, इसमें बहुत सारी रुचि होगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो शब्द है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च बेस्ड है, बहुत वास्ट है। जो काफी मैं मेरे हिसाब से पूछूंगी, मुझे इसमें थोड़ी कठिनता लगी समझने में, क्योंकि मुझे पर्सनली इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा यही सवाल रहेगा कि हम जो साधारण आयुर्वेद वैद्य लोग हैं, उनके लिए एआई का उपयोग हम स्टार्टअप के तौर पे किस तरह करें, इसका थोड़ा आप हमें मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत ही हमें इससे अधिक लाभ मिलेगा। थैंक यू सर। यस, स्नेहा जी, आपने ये जो प्रश्न पूछा है, तो इससे मुझे और एक बार इसको मेरा जो टॉपिक है उसका जो सार है वो बताने का चांस मिला है। तो सही में क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, बेसिक। तो जैसे कुछ दिनों पहले मैंने कुछ वैद्यों के बाद, मतलब हम जो प्रेजेंटेशन करते थे, लेक्चर लेते थे, तो वहां पे सबसे पहले वैद्यों का क्वेश्चन रहता था कि डॉक्टर, मेरा एक खुद का फॉर्मूला है, ये मैं मेरे पेशेंट पे यूज कर रहा हूँ, और इस फॉर्मूला को मुझे मेरी खुद की मेडिसिन करके बेचना है। जैसे कि हमें पता है कि वैद्य पाटनकर काढ़ा बहुत फेमस है, हम लिख के देते हैं, उनके नाम से है। तो ये सब हमारे ग्रंथों की ही दवाइयां हैं, लेकिन उनके नाम से वो फेमस हो गई। तो ये हो गया मार्केटिंग का या फिर बिजनेस का तरीका हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो चीज है जो आपका डेली और रिपीटेटिव वर्क इसको कन्वर्ट करेगी आपके अर्निंग्स में, आपका काम इजी करने में। तो जैसे आपने पेटेंट वर्ड सुना होगा कि जो भी कोई चीज हमें यूजफुल लगती हो या डिफरेंट हो, यूनिक हो, तो उसका हम पेटेंट ले सकते हैं। उसी तरीके से जो भी चीजें हम रिपीटेडली करते हैं हमारे क्लिनिक में, हमारे प्रैक्टिस में,
तो उसी को सिंप्लीफाई करके असिस्टेंस करना, ये एआई का मतलब है, एकदम सिंपल भाषा में। अभी इसका हम यूज कैसे करें? तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलेक्सा ने एक पेशेंट से डिस्कशन करने का जो ट्रायल है वो कंप्लीट किया है। तो अभी हम अलेक्सा जैसा जो मॉडल है हम खुद नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम उसका यूज कर पाएंगे हमारी इसमें। तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखने का असिस्टेंस मिलेगा। और दूसरी चीज इसमें ये रहेगी कि आपको अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी नई कंसेप्ट आती है कि ये जो काम है मुझे किसी से करवाना पड़ता है, तो वो अगर मैं मेरे वॉइस कमांड से या मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन से कर सकता हूं या कर ले सकती हूं, तो उसको आप डिजाइन कीजिए और उस डिजाइन को आप किसी भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे उनके पास ले जाइए, उनके साथ आप उसका कोलैबोरेशन कीजिए और कोलैबोरेशन करके आप उस पे ऊपर कुछ स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद उसको आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। एक आपका सबसे इजी वे हो गया। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपके मेरे प्रेजेंटेशन में बताई है, आप फिर से एक बार उसको सुनिए। वो सुनने के बाद में आपको हर एक एस्पेक्ट पता चल जाएगा। आप आपके क्लिनिक में जो भी रिपीटेटिव चीजें करते हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए और उसको आप एआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया है। मेरा विषय जो है निदान है, रोग निदान। तो जब मैं मेरी ड्यूटी रोग निदान के लैब में रहती थी तो हमारे यहाँ सैंपल आते थे, ब्लड के सैंपल। तो सैंपल को देखते देखते मुझे दिमाग में क्लिक हो गया कि अरे इसके तो एचबी लेवल अलग है, आरबीसी लेवल अलग है और उसके शेड भी अलग है, तो क्या हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे वातपित्त कफ में? तो इसी क्वेश्चन से फिर आगे चलते चलते एआई के साथ में हम उसको डेवलप कर पाए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। और आप बेंगलोर में रहते हो अगर, तो सबसे ज्यादा अच्छा है, किसी भी आईटी कंपनी के साथ आप टाइप कर सकते हो। और इसके बाद में आती है दूसरी बात, डेटा जनरेशन की। तो डेटा जनरेशन के लिए आपको सभी गवर्नमेंट के आयुर्वेद कॉलेजेस खुले हैं, सभी प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं, सभी बड़े अस्पताल खुले हैं। आप उनसे अगर टाइप करेंगे, टाइप करने में कुछ नहीं लगता है। इट इज अ एमओयू, इट्स अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल। तो ये आप एमओयू करके आपका काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल सेटअप में इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे आनंद सर जी का प्रश्न है। हाँ सर, एक्चुअली अभी जो नए रिलेटेड टू कंसल्टेंसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट रहेंगे, तो उनके लिए आप चैटबॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि आपके यहाँ अगर कोई स्पेसिफिक पेशेंट एडमिट होते हो, तो पेशेंट क्या करता है, रेफरेंस से आते हैं हमारे पास, तो उनको आप पहले से उसकी जो प्रोटोकॉल्स है, जानकारी आप उनको दे सकते हो। तो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू, द चैटबॉट्स। अभी रिसेंटली वो बहुत फेमस है, आप देखते होंगे। तो किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं हम, तो वहां पे जैसे कि एफएक्यू जो है हमारे, वो पहले से फीड किए हुए रहते, तो डेटा उनको क्वेश्चंस दे देता है। तो उसके लिए हमें पर्सनल असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो हॉस्पिटल लेवल पे आप सबसे ज्यादा उसको यूज कीजिए। देन अनदर थिंग इज द मॉनिटरिंग द हेल्थ सिस्टम। जैसे आप हम लोग डेली राउंड लेते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो जो जो पैरामीटर्स हम वहां पे लेते हैं, तो उन पैरामीटर्स के लिए, जैसे कि अभी नाड़ी यंत्र है जो नया आ रहा है, जीवा परीक्षण का है, तो उस पे आप उनका यूज कीजिए आपके हॉस्पिटल सेटअप में। तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा देगा और आपका खुद का डेटा वो रहेगा, आपका पेशेंट का डेटा उसमें रहेगा। और समझो ये प्रीवियसली किसी ने ऑलरेडी वो डेवलप किया है, तो शायद ऐसे हो सकता है कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप आपके रीजन से दे रहे हो। समझो आप बेंगलोर में, तो वहां पे कुछ अलग कंडीशन है, तो आप उनको एडिशन कर रहे हो उनके नॉलेज को, तो उसका भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो हेल्थ मॉनिटरिंग है रेगुलर, तो वो भी आप आपके इसमें यूज कर सकते हैं। वैद्य विक्रम पाटिल सर जी ने मैसेज किया था कि कैन यू गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड। आई थिंक वैद्य विक्रम जी, कौन सी स्लाइड आप चाहते हैं देखना? थैंक यू सर। जो सर ने त्रिसूत्री बताई आयुर्वेद एआई की,
ह्यूमन हाँ। डेटा, थेराप्यूटिक्स एंड आयुर एआई और आयुर डॉक वाली स्लाइड एंड डिसीज डायग्नोसिस। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं आयुर आपको AI उसमें कुछ आयुर क्वेश्चन AI, है हाँ या वही। आपको चाहिए? अच्छा, आयुर डॉक। नहीं, आई थिंक उनको वो स्लाइड देखनी थी वापस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पीपीटी आपके पास है, आप उनको शेयर कर दीजिए। अच्छा, हाँ 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 उस सर। पे ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो फिर हम लोग उसको लेंगे। जी और इसके बाद में भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जी जैसे ही समय निकलेगा उसको रिप्लाई कर दूंगा।